So friends, continuing further, I will import the file first. Say I will go to get data, and as it is a Excel file, not CSV file, I am importing this file from the desktop. It is in one of my folder here. Okay, so I will import this file HR data, this one. Now the file is getting imported. So but here I have the options whether I want to go to the Power Query editor or not. So that choice is with me. So if I load it directly, it will go to the Power BI interface. Otherwise, if I transform the data, then it will be switched over to the Power Query editor. Power Query editor is a very powerful tool, which is again a Microsoft product, of course, which goes hand in hand with Power BI, but it is having so many options. Now the moment the file is seen in the Power Query editor, you have this menu, that is home, transform. I have so many videos on Power Query editor separately, you can refer those. So add column, view, tools, and so on. So add column is very important, where we can go for a custom column or invoke the custom column, go for conditional, you can go for indexing the column, you can extract the data, you can parse the things, and so on. So right now I'm not doing any change in this. Here also, if your header is having some column 1, column 2 generic name, then you can use this menu, and so many options are here. Use first row as header and so on. You can change the replace values here, you can change, you can remove the columns, you can remove the errors if these are there in the data. So basically it is for cleaning or pre-processing the data file which we are supposed to use for visualization in Power BI. So simply I will go and close and apply option to this, so that it is launched in Power BI. Okay, so now the file is getting imported into Power BI. Power BI में फाइल आने के बाद में मुझे यहाँ डेटा में वो पूरे टेबल दिख जाएगा, फील्ड दिख जाएंगे, क्योंकि ये एक ही टेबल है अभी, तो यहाँ पर मुझे एक टेबल रहेगा और उसके फील्ड्स रहेंगे लाइक दिस. सो ये वाले फील्ड थे जो हमने इंपोर्ट किए थे HR डेटा के फाइल से, जो एक्सेल फाइल देखा था, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन. ठीक है, अभी मुझे क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ आ जाना चाहिए, सो दैट मुझे उसको अलग से कुछ सेपरेट कुछ और होना नहीं. तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट के ऑप्शन में एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन लेता हूँ, और मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था टेक्स्ट मोड में, उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर. विल कॉपी दिस, कम बैक टू दिस, एंड देन पेस्ट इट हियर. ओके, अब मैंने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा यहाँ आ चुका है अभी. तो नाउ हियर आई कैन चेंज द फॉर्मेट और वो सब उसका जो भी है. ठीक है, नाउ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अवेलेबल विथ मी. तो ये मेरे पास में आ जाए तो मेरे पास में मेरा काम आसान हो जाता है फिर, राइट. So मतलब what is I need to visualize, that is very clear from this, that is how many people are in each job. ये अगर मुझे ढूंढना है अभी, तो what I will do, this is my page 1 which is a problem statement now, but I will go to the page 2 and then say I may go for a some visual here. Okay, or we can continue this in the next video just to have the shorter length of the file. Thank you so much.